Give the heading. हेडिंग नहीं, जैसे कि हम लोग कार्टिलेज के बारे में पढ़े थे ना, वी आर कमिंग एक्चुअली वोकल कॉर्ड. Vocal cord, two different types. One is true vocal cord, another is false vocal cord. The true vocal cord है that is actually inner. The false vocal cord है that is actually outer. And this inner vocal cord during expiration vibration during expiration the vibration leads to production of sound. And the second, that is false, that is outer, do not have any role in sound production. तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ट्रू वोकल कॉर्ड एंड फॉल्स वोकल कॉर्ड में साउंड एक्चुअली कौन प्रोड्यूस करता है. And that is what? The true vocal cord. The false vocal cord does not produce any sound. Second point क्या है? आपको क्वेश्चन है कि साउंड प्रोडक्शन इज ए इंस्पिरेशन और एक्सपिरेशन. मतलब जब एयर बाहर निकलता है ना, जब बाहर एयर निकलता है उस टाइम में ये वोकल कॉर्ड वाइब्रेटेड होता है बिकॉज ऑफ द प्रेशर, एंड उस प्रेशर की वजह से साउंड रिलीज होता है. सो इट इज not the inspiratory sound but it is expiratory sound. समझे? Now second point is in case of male vocal cord well developed under the influence of टेस्टोस्टेरोन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मेल के केस में वोकल कॉर्ड ज्यादा डेवलप हुआ है किसके प्रेजेंस में, इन प्रेजेंस ऑफ विच हार्मोन, ना टेस्टोस्टेरोन. वेल डेवलप्ड होने से क्या होगा? एरिया लार्ज होगा कि एरिया स्मॉल होगा? लार्ज एरिया, क्योंकि साइज डेवलप हो रहा है, वेल डेवलप्ड होगा. एंड साइज के रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा. रहेगी नहीं. अगर एरिया बढ़ रहा है तो प्रेशर क्या होगा? कम होगा. And that is why in case of male the voice is low pitch voice or broad pitch of voice, but in case of female as it is not so well developed, that is why the pressure will be high, and that is why the female having narrow pitch of voice or we can say high pitch of voice. बात को समझेगी नहीं? फीमेल में is high pressure or high tension leads to high pitch or
narrow picture voice. तो मेल के केस में क्या होगा, हाई टेंशन की लो टेंशन, ठीक है ना। तो मेल के केस में हो जाएगा लो टेंशन, and that is why it is low pitch of voice or broad pitch of voice. So इसीलिए टेंशन के रिस्पेक्ट में पिच होगा, ठीक है। Now we are coming to as per the structure we have discussed in the previous class. नेक्स्ट हम लोग देखिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ट्रैकिया। ट्रैकिया जिसको हम लोग पॉपुलरली क्या बोलते हैं, विंड पाइप। यस, दैट इज विंड पाइप। दैट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम larynx, passes through mid thoracic cavity, passes through mid thoracic cavity and divided into two primary bronchi at fifth, ये बहुत इंपॉर्टेंट, thoracic body. What is the exact position where the trachea divides into two primary bronchi? ये क्वेश्चन आपको पक्का पूछेगा। देखो ये आपका क्या हो गया ना, थोरैक्स हो गया। देखो थोरैक्स एंड एब्डोमेन, who separating the thoracic cavity from abdominal cavity? Diaphragm, dome shaped, ठीक है। यहाँ पे हो गया लैरिंक्स, वॉइस बॉक्स। एंड ये जो मेल के केस में हाईली डेवलप्ड हुआ है, दैट थायराइड कैटिलेज, हमने पढ़े थे प्रीवियस क्लास में। ये थायराइड कैटिलेज हुआ है ह्यूमन बीइंग के केसेस में, हाईली डेवलप्ड है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टेस्टोस्टेरोन, एंड दिस इज कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। क्या उसका नाम है, यहाँ पे आपको दिखाई देगा मेल के केस में, फीमेल के केस में ये एब्सेंट है। सो एडम्स एप्पल याद रखिएगा, एडम्स एप्पल इज रिलेटेड टू व्हाट, मेल, एंड दैट इज एक्स्ट्रा डेवलपमेंट ऑफ व्हिच कैटिलेज ना, थायराइड कैटिलेज। आपको समझे। Now this trachea is extended from the larynx up to the fifth vertebral column. पीछे बैक साइड में vertebral column है। Vertebrae is made up of what ना, 26 bone। कितना बोन है, 26। 7 होता है सर्वाइकल रीजन में, नेक पार्ट में है। उसके बाद थोरैसिक वर्टिब्रे कितना है ना, 12। फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे का पोजीशन बैक साइड में जिस जगह पे है, उसी पोजीशन में ये ट्रैकिया डिवाइड करके टू प्राइमरी ब्रोंकाई में कन्वर्ट हुआ है। सो एग्जैक्टली व्हाट इज द, इसलिए मैंने लिखा इट इज एक्सटेंडेड फ्रॉम लैरिंक्स, passes through the mid thoracic cavity and divided into two primary bronchi at which position ना, fifth thoracic vertebrae। समझे। सेकंड पॉइंट, इट इज सपोर्टेड बाय (16 to 20 number of C-shaped dorsally incomplete cartilaginous ring एंड हमेशा याद रखिए ये जो cartilaginous ring है, इट इज C-shaped है, dorsally है, incomplete है।
अगर ये कंप्लीट होता तो भी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है बोलिए? ये सी सेप्ट है, ऐसे रिंग सेप्ट होता तो कंप्लीट होता है कि इनकम्प्लीट होता है? कंप्लीट। लेकिन ये क्या है? सी सेप्ट। मतलब कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? एंड विच साइड उसका इनकम्प्लीट है? ये वेंट्रल साइड है, मतलब बेली साइड। बैक साइड क्या हो गया? डॉर्सल। तो ये किस साइड में उसका उसका जो इनकम्प्लीट पार्ट कौन से किस साइड में है? डॉर्सल साइड में। उससे फायदा क्या होगा? सपोज टू हम लोग बात करते हैं, कभी कभी जोर से चिल्ला के बात करते हैं, कभी कभी जोर से हम लोग सांस लेते हैं, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन बहुत फास्टर हो जाता है कि नहीं? तो ये प्रेशर किसके ऊपर पड़ता है? ट्रैकिया के ऊपर ना। तो ट्रैकिया हो सकता है कि ब्रस्ट कर जाए, ट्रैकिया हो सकता है कि कोलैप्स कर जाए। एंड उसको प्रिवेंट करने के लिए इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रहेगा तो ये शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करेगा कि नहीं? प्रेशर को, टेंशन को ये एब्जॉर्ब कर सकेगा। इसीलिए ये जो सी सेप्ट कार्टिलेजिनस रिंग्स है, हमेशा इसका एक ही फंक्शन है, प्रोटेक्शन। शॉक एब्जॉर्बर and that is protective in nature. Next आता है after the trachea, next we are coming to bronchi. प्राइमरी ब्रोंकस, देखो ब्रोंकाई प्लूरल है तो सिंगुलर क्या हो जाएगा? ब्रोंकस। हम लोग डायरेक्ट ब्रोंकाई में आते हैं। प्राइमरी ब्रोंकाई branched and rebranched to form bronchial intercom. So what is the meaning of bronchial intercom? First of all, bronchial intercom का मतलब क्या है? The bronchial intercom is the branching and rebranching of which structure? The primary bronchi branches and rebranches again to form the structure which is called as bronchial intercom. The bronchial intercom just like a tree-like arrangement. Bronchial intercom में सीरियली में बता देता हूँ क्या क्या। सेकेंडरी ब्रोंकाई, ये प्राइमरी तो ब्रांचिंग हुआ, सेकेंडरी ब्रोंकाई गिव्स राइज टू व्हाट? टर्शियरी ब्रोंकाई gives rise to tertiary bronchi gives rise to terminal bronchi. Gives rise to lobular bronchus, like bronchioles, lobular bronchioles. Lobular bronchioles gives rise to terminal bronchiole. Terminal bronchiole gives rise to respiratory bronchiole. And respiratory bronchiole gives rise to, yeah, that is alveolar sac. Alveolar sac with alveoli. ठीक है, अभी मैं उसका डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, आपको इजी हो जाएगा। बिफोर दैट मैं यहाँ पे एल्वियोली टॉपिक पहले फिनिश कर लेता हूँ, हम लोग फिर इसका डायग्राम में जाएंगे। एल्वियोली, the unit of lung,
and approximately 300 million in both lungs. तो इसका मतलब कितना हो गया? Each lung carries how many number of alveoli? 150 million. So both lung contains 300 million numbers of alveoli. And it is the unit of lungs means the site of what? The main site of exchange of gases. मैंने यहाँ पे मेन साइट लिखा, मतलब ऐसा भी कोई साइट होगा जहाँ पे एक्सचेंज होता है अपार्ट फ्रॉम दी एल्वेओली, वो भी हम दिखा. Alveoli actually contains two different type of cells. The alveolar cells are called as what? The pneumocyte. Alveolar cells are called as pneumocyte, and this alveolar cell contains two different type of alveolar cells or pneumocyte, that is type 1 and type 2. Type 1 जो है वो almost 90% के आसपास है. Only the 10% of the your cells present in the alveoli is type 2. So let's discuss about the type 1 and type 2. Type 1, that is 90% of the alveolar cells, which is type 1, which actually is squamous. याद करिए टिश्यू चैप्टर में हम लोग पढ़े थे squamous epithelium, the simplest epithelium, that is the site where the exchange of the respiratory gases takes place in the alveoli. So squamous, and that is role in exchange of gases. Type 2 है, type 2 otherwise called as what? The septal cell. इसका other name septal cell. And this is actually which type? The cuboidal or cubical cells. तो टाइप 2 जो सेप्टल सेल है उसका वैरायटी ऑफ सेल्स क्या है ना, वहां पे स्क्वामस सेल्स है, यहाँ पे क्या है ना क्यूबिकल सेल्स है. एंड टाइप 1 का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस. बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टाइप 2? दैट सीक्रेट. याद करिए हम लोग पढ़े थे बायोमोलिक्यूल चैप्टर में, लेसिथिन पढ़े हैं. यस, फॉस्फोलिपिड. So which cells of the alveoli secrete the lecithin? Type 2. Type 2 alveolar cells secrete the lecithin, the phospholipid, a oily substance. An oily substance which act as surfactant. बताया था ना कि लेसिथिन क्या है ना, सरफेस एक्टिव एजेंट. So it actually act as surfactant which reduces the surface tension between alveolar air and alveolar fluid. So prevent the collapsing of lungs alveoli. बहुत ही important है, very very important. Remember this point.
यहाँ पे भी सेम फंडा काम करेगा कि प्रेशर अगर इंक्रीज हो रहा है मतलब क्या है, तो प्रेशर और टेंशन, टेंशन मतलब प्रेशर, तो प्रेशर अगर इंक्रीज करे तो मतलब क्या है, एरिया इंक्रीज करे कि एरिया डिक्रीज करे। अगर एरिया डिक्रीज करते 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 पूरा अगर कोलैप्स्ड हो गया तो फिर हम लोग का डेथ हो जाएगा, वी कैन नॉट ब्रीथ एनीमोर। तो इसीलिए लंग्स का एल्वियोली को कोलैप्सिंग से प्रिवेंट करना है। अगर कोलैप्सिंग को प्रिवेंट करना है मतलब हम लोग को प्रेशर को रिड्यूस करना है कि प्रेशर को इंक्रीज करना है, वी नीड टू रिड्यूस द प्रेशर इनसाइड द एल्वियोली। And that is why this is the surface acting agent or surfactant act as oily substance phospholipid which actually preventing or reducing the surface tension between the alveolar air and alveolar fluid present within the alveoli. उससे अगर प्रेशर कम रहेगा, रिड्यूस रहेगा, मतलब ये इन्फ्लेटेड होके रहेगा कि कोलैप्स्ड होके रहेगा, इन्फ्लेटेड होके रहेगा, so that will able to breathe. एंड आप लोग को ये जानना होगा कि किसी बच्चे के केसेस में इन्फेंट जब डिलीवरी के टाइम में जब इन्फेंट का फर्स्ट जो है वो हेड निकलता है, मैं नॉर्मल डिलीवरी की बात कर रहा हूँ, द हेड विल बी कम्स फर्स्ट आउट एंड एज द हेड विल कम फर्स्ट आउट द फर्स्ट ब्रीदिंग विल स्टार्ट एंड दैट फर्स्ट ब्रीदिंग उससे पहले तक लंग्स एल्वियोली एक बच्चे के केसेस में बिफोर डिलीवरी की बात कर रहे हैं, पूरा क्या है ना कोलैप्स कंडीशन में, ठीक है। तो जैसे ही फर्स्ट ब्रीथ हुआ ये जो एल्वियोली है क्या हुआ, इन्फ्लेटेड। एंड ये जो एयर है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या ना रेसिडुअल एयर, ये लाइफ लॉन्ग प्रेजेंट रहेगा, लाइफ लॉन्ग। हम बताएंगे इसी चैप्टर में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सब चीज, समझ में आ रहा है कि नहीं। विल कंटिन्यू उसको अलग अलग क्लासेस बताएंगे इसको। याद रखिए एल्वियोली में और एक सेल है जिसका नाम है डस्ट सेल। व्हाट इज डस्ट सेल, एल्वियोलर फंक्शन डस्ट बोन ईटर होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्लास्ट से कार्टिलेज में जिसमें माइक्रोग्लिया, वैसे ही एल्वियोली में लंग्स में अभी लंग्स का डायग्राम नहीं किया हूं। हम प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी दोनों का ही दिखा रहे हैं। कितना ब्रांच हम कर रहे हैं वो देख के काउंट करके करना।
This is actually trachea. Trachea leads to primary bronchi. ये जो मैं कर रहा हूँ एक्चुअली क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग से दिखाई दे रहा है. Yes. This is trachea. This is to primary bronchi. This is secondary bronchi. This is tertiary bronchi. Then after several division, that form the structure called as terminal bronchi. Then lobular bronchioles, जिसको हम लोग अदरवाइज क्या बोलते हैं, द इनिशियल ब्रोंकियल्स. ब्रोंकियल्स का जो बिगिनिंग पार्ट है उसी को तो हम लोग इनिशियल ब्रोंकियल्स बोलेंगे. तो ब्रोंकियल्स कहां से स्टार्ट होता है, लोब्यूलर ब्रोंकियल्स से. तो इसीलिए लोब्यूलर ब्रोंकियल्स को हम अदरवाइज क्या बोल सकते हैं, इनिशियल ब्रोंकियल्स. इसका इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि ये एनसीईआरटी में लिखा गया चीज, मैं बताऊंगा. Then it gives rise to what? Na terminal bronchioles. Then gives rise to respiratory bronchioles.
Respiratory bronchioles gives rise to alveolar duct. Alveolar duct gives rise to atrium. Atrium gives rise to alveolar sac with alveoli. पहले आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, फिर मैं उसके ऊपर जो भी डिस्क्रिप्शन है मैं बोल दूंगा। तो अगर मैं सारे के सारे ब्रांचेस को आपको डायग्रामेटिकली दिखा पाऊं, सपोज टू बी, तो कैसे आपको विजुअलाइज होगा? ट्री को उल्टा करने से जैसे दिखाई देगा, रहेगी नहीं? तो हमारे लंग्स के अंदर ऐसे ब्रांचेस ऑफ ट्री है, एंड दैट branching of the primary bronchi gives rise to the whole structure. Yes or no? Is called as bronchial intercom. ठीक है, मैं आपको एक छोटा सा सेक्शन दिखा रहा हूं, पार्ट दिखा रहा हूं, ताकि आपको समझ में आए कि कितना ज्यादा ब्रांचेस हुआ हो। तो जितना ज्यादा ब्रांचेस होगा, फाइनली नंबर ऑफ एल्वेली उतना ज्यादा होगा कि नहीं? इसीलिए एक ट्री में ट्रंक तो एक ही होता है, लेकिन लाखों में कितना होता है ना, लिप्स। वैसे ही समझ में आया? ब्रांचेस जो मैंने आपको बोला था, सीक्वेंस आपको दिखाई दिया? अभी सीक्वेंस क्या है? नाउ जहां पे मैं एग्जैक्टली डिमार्केटेड करूंगा, आप लोग भी वहीं पे करना। मैंने कहां पे डिमार्केशन किया? इन बिटवीन द टर्मिनल ब्रोंकियोल्स एंड रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल्स। दिखाई दिया? Make it demarcated so that we understand. This is one part, this is another part. This part is called as conducting part. Why it is called as conducting part? Because it is the up to the terminal bronchioles, only the respiratory gas actually conducted. Means खाली carry होता है respiratory gases, exchange नहीं होता है। बात को समझेगी नहीं? That is why no exchange gases takes place. Only the conduction of the gases takes place from the trachea up to the terminal bronchioles. The second part here, this is called as conducting part. Second part is exchange or respiratory part. So here actually the part where the exchange of gases takes place. एक्सचेंज में पार्टिसिपेट कौन पार्ट कर रहा है? देखिए तो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियल्स, alveolar duct, atrium and alveolar sac. All these are participate in the exchange of the respiratory gases, right? जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखा गया है, वो मैं आपको बोल देता हूँ। सबका डायग्राम कंप्लीट है? गुड। हो गया?
incomplete cartilaginous ring present up to initial bronchioles. इनिशियल ब्रोंकियल्स मैंने कौन सा बताया है अभी? मतलब बिगिनिंग ऑफ ब्रोंकियल्स कहां से होता है? लोब्यूलर ब्रोंकियल से। तो ये क्या बोल रहा है? द इनकम्प्लीट कार्टिलाजिनस रिंग्स आर प्रेजेंट अप टू व्हाट? इनिशियल ब्रोंकियल्स तक एक्चुअली कार्टिलाजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। मतलब आप ये बोल सकते हैं फ्रॉम द टर्मिनल ब्रोंकियल्स अप टू द एल्वियोली this is no cartilaginous ring with cartilaginous ring. So from terminal bronchioles to the alveoli there is no cartilaginous rings is present. Cartilaginous rings is present up to the initial bronchioles and that is here in this diagram it is indicated as lobular bronchioles. समझे? क्वेश्चन पूछेगा which of the following structure of the conducting part is without cartilaginous ring? कंडक्टिंग पार्ट का कौन सा पार्ट है जो विदाउट कार्टिलाजिनस रिंग है? टर्मिनल ब्रोंकियल। समझे या नहीं समझे? समझ में आ गया? तो टर्मिनल ब्रोंकियल्स कम्स अंडर द कंडक्टिंग बट विदाउट कार्टिलाजिनस रिंग। बाकी जितने भी कंडक्टिंग पार्ट है उसमें क्या है? कार्टिलाजिनस रिंग्स प्रेजेंट है। साहब सबको समझ में आ गया? टाइप 2 alveolar cell in respiratory bronchioles is called as Clara cell. तो अगर मैं पूछूं कि क्लारा सेल secrete the surface active agent or surfactant or lecithin, true or false? Clara cell secrete the lecithin, true or false? क्योंकि क्लारा सेल टाइप 1 alveolar सेल है कि टाइप 2 है? एंड टाइप 2 क्या सीक्रेट करता है? लेसिथिन। रहेगी नहीं क्योंकि रेस्पिरेटरी गैस एक्सचेंज जहां हो रहा है वहां पे लेसिथिन की जरूरत पड़ेगा कि नहीं? एंड रेस्पिरेटरी पार्ट इज दैट इज कंडक्टिंग पार्ट, व्हाट इज एक्सचेंज पार्ट? Respiratory bronchial CJ comes under respiratory part की that is conducting part. Respiratory bronchials comes under the exchange or respiratory part. तो वहां पे आपको लेसिथिन की जरूरत पड़ेगा कि नहीं? And that is why the Clara cell, the type 2 alveolar cell present in the respiratory bronchioles also, मतलब alveoli में भी type 2 है प्लस respiratory bronchioles में भी type 2 जो कि लेसिथिन सिक्रेट करता है। समझ में आ गया? कंप्लीट है क्या सबको? हम नेक्स्ट पेज में आ रहे हैं। फर्स्ट टू द डायग्राम ऑफ लंग्स। देखो बीच में करिएगा, दोनों साइड में लेवलिंग होगा। देखिए मैं आपके सामने ऐसे खड़ा हूं, राइट? ठीक है, पहले समझ लीजिएगा, डायग्राम उसी के अकॉर्डिंगली करिएगा, नहीं तो इधर उधर हो जाएगा। आई एम जस्ट स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, दिस इज माय राइट साइड एंड दिस इज माय लेफ्ट साइड, करेक्ट? राइट साइड में जो डायफ्राम है वो थोड़ा सा एलिवेटेड पोजीशन है,
इट इज ओनली बिकॉज ऑफ द पोजीशन ऑफ लीवर इन द राइट साइड। तो डायफ्राम के ऊपर दो लंग्स सिचुएटेड है, तो अगर राइट लंग्स थोड़ा सा एलिवेटेड हुआ तो राइट डायफ्राम अगर एलिवेटेड हुआ तो राइट लंग्स क्या होगा, थोड़ा सा ऐसे स्क्वीज हो जाएगा कि नहीं, इसलिए आपको राइट लंग्स थोड़ा सा ब्रॉड दिखेगा, ब्रॉड। राइट लंग इज लार्ज but it is looks small size because of the elevated position of what na diaphragm, because of the position of the liver in the right side। तो इसीलिए राइट लंग आपको थोड़ा सा ब्रॉड दिखेगा, बट साइज में क्या दिखेगा, स्मॉल। लेकिन राइट लंग लार्ज लंग स्मॉल। अगर लेफ्ट साइड वाला देखिए, लेफ्ट साइड में हार्ट पोजीशन है कि नहीं, एंड हार्ट का पोजीशन एग्जैक्टली क्या है ना, इन बिटवीन द लंग्स, called as mid thoracic cavity, slightly towards left की slightly towards right, इसीलिए उसको बोलते हैं लेवोकार्डिया। तो हार्ट का पोजीशन नॉर्मली क्या होता है ना, टुवर्ड्स लेफ्ट होता है, बहुत ही रेयर केसेस में राइट की तरफ होता है। तो लेफ्ट पोजीशन में अगर आ गया तो क्या होगा, लेफ्ट लंग थोड़ा सा स्क्वीज दिखेगा कि नहीं, नैरो दिखेगा कि नहीं, एंड दैट इज कॉल्ड एज कार्डियक नॉच वेयर द heart is located, and that is why the left lung is slightly narrow। तो narrow का तो elongated होगा कि नहीं, समझ में आ गया? yes। डायग्राम करने के टाइम में भी हर चीज को ध्यान में रख के डायग्राम करना पड़ता है। लंग्स के चारों तरफ क्या प्रेजेंट होगा, प्लूरल मेम्ब्रेन होगा कि नहीं, yes। जैसे हार्ट के चारों तरफ पेरिकार्डियम होता है, वैसे लंग्स के चारों तरफ क्या होता है, प्लूरल मेम्ब्रेन। राइट लंग्स का कितना डिवीजन हुआ, लेफ्ट लंग का, विच इज द लार्जेस्ट चैम्बर, मतलब लार्जेस्ट लंग कौन है वो, राइट, क्योंकि इसमें तीन चैम्बर होते हैं, एंड दैट इज द रीजन व्हाई द प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी सेकेंडरी ब्रोंकाई। इसीलिए सेकेंडरी ब्रोंकाई राइट साइड में कितना है ना, 3 है। टोटल नंबर ऑफ टर्शियरी ब्रोंकाई प्रेजेंट इन द राइट लंग, हाउ मेनी, देखिए तो गिनिए तो टोटल टर्शियरी ब्रोंकाई कितना है राइट साइड में, 3 3 4 दिख रहा है कि नहीं, तो कितना हो गया, 10। एंड लेफ्ट साइड में कितना टर्शियरी ब्रोंकाई है, 8 दिख रहा है आपको, एंड राइट साइड में कितना सेकेंडरी है ना, 3। राइट लेफ्ट साइड में कितना सेकेंडरी है ना, 2, क्योंकि लोब कितना है, 2।
डायग्राम आप लोग पूरा कर लीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको लेबलिंग करके इसको कंप्लीट करेंगे।